Hello everyone, welcome to LRDA Prep. My name is Samir Sarvana, and in this video we are going to discuss the next question of the set that we were discussing uh, of maxima and minima set, where the students getting more than 80% marks in these classes in individual subject is mentioned. The intersection of these subjects is not given. That means we do not know what are the students getting more than 80% in English, Hindi and science combined, or only in English and Hindi. No such thing is mentioned. And this complete set is based on the maxima and minima concept. And here in this question, we are supposed to find out the answer for the number of students in 8th class, right? So this is our 8th class, right? The number of students getting more than 80% in 8th class in at most two subject. The important point here is the at most two subject. All the previous question that we were discussing, there it was mentioned the number of students who are getting more than 80% in exactly two subject, or getting more than 80% in exactly three subject, or getting more than 80% in exactly four subjects, right? So the word exact was mentioned in the previous question that we discussed. You see that this is the previous question, question number 2, where it was mentioned, where we were finding the students getting more than 80% in exactly four subjects, right? Now here it is mentioned the number of students getting more than 80% in at most two subjects. ज़्यादा से ज़्यादा दो subject में उसके 80 से ज़्यादा आने चाहिए. So when I say the number of subjects to be at most two, that means in at most two the number of students who are getting 80% in zero subject will also be included. The number of students who are getting more than 80% in one subject will also be included, and the number of students who get more than 80% in two subject will also be included. Now this is the value that I need to maximize. Why I need to maximize this? Because it's the question's demand. It's mentioned, the word mentioned over here is at most. Okay. And the total number of possibilities that we have is that there are some students getting 80% in 0, 1, 2. There will be some students who will be getting 80% in 3 subjects. There will be some students who will be getting 80% in 4 subjects. There will be some students who will be getting 80% in 5 subjects, 3 subjects, 4 subjects, and 5 subjects, right? Now, if I want to maximize the value, I need to minimize the value. Now you see that the concept that we assumed is, if I do not know what is the intersection between two different subjects, what will I do? I'll assume I'll see what are the number of prizes I'm distributing. A one subject more than 80% means one prize will be given to the students. Two subjects more than 80% means two prizes will be given to that person. Now let's see in 8th class how many prizes you are distributing. 15 plus 20. Okay, how do we do the sum, right? I told you the trick in the last session. 20 20 20 20 20, right? 100 minus 5, 95. Why minus 5? Because it's 5 less than 20. Okay, 95 plus 2, 97 plus 1, 98 plus 4, 102. So in 8th class we have distributed 102 prizes. We have distributed 102 prizes in 8th class. Now if I want this value to be maximized, that means I want these 102 prizes to be distributed in such a way that you distribute one prize to one student, two prize to two. I need to maximize these students, right? I need to distribute maximum number of prizes here. If these prizes distributed maximum over here, I get maximum number of students here, right? If these prizes distributed maximum over here, then I'll get minimum number value over here, right? If I have to maximize this value, that means so जो prizes जो हैं, जो 102 prizes मेरे को distribute करना है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 0, 1 और 2 सब्जेक्ट्स वाले बच्चों को मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करना है. अच्छा, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, कैसे आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है? बहुत ही बढ़िया ट्रिक है क्वेश्चन को सॉल्व करने का. आपको बेसिक स्ट्रक्चर मैंने क्वेश्चन का समझा दिया. नाउ लेट्स कवर कि इसका लेट्स डू द कंप्लीट कॉन्सेप्ट ना, कि क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं. सी दिस. Okay, see that now. We have, you see that total number of prizes that we were distributing in 8th class is 102, right? Yes, 102, right? Now, how many students are there in 8th class? The number of students in 8th class are 40. The total number of students in 8th class are 40, right? These are the total number of students that we have in the 8th class, right? Okay. 40 are the total number of students. Now,
I want to maximize the students getting 0 prizes, getting 1 prize, and getting 2 prize, right? Now, if I distribute these 102 prizes by giving 1 prize to everyone, how many prizes will be used out of 102? 40 prizes will be used. You see that? If I write down, let's say these 40 students have the roll number from roll 1 to 40, right? So roll number 1, roll number 2, roll number 3 and up to 40. So these are the 40 students. So मैंने क्या किया, 102 प्राइज में से 1 प्राइज इसको दिया, 1 प्राइज इसको दिया, 1 इसको दिया, सबको 1 1 दे दिया. तो कितने प्राइज यूटिलाइज हो गए? 40 प्राइजेस मेरे यूटिलाइज हो गए. ओके, क्यों कर रहा हूं ऐसा? बिकॉज मेरे को 1 एंड 2 वालों को मैक्सिमाइज करना है. तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को 1 प्राइज और 2 प्राइज देना है, तो पहले 1 1 दे दिया. ओके, 2 एटमोस्ट 2 है तो 2 से ज्यादा नहीं देने का ट्राई करना है अपने को. वी ट्राई टू सी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ बच्चों को 2 तक ही प्राइजेस मिले. ओके, इसके बाद क्या करेंगे? 102 में से 40 प्राइजेस यूटिलाइज हो गए. सो आई विल बी लेफ्ट विद 62 प्राइजेस नाउ. So what will I do with these 62 prizes? Again, I will distribute 1 prize to everybody. 1 prize इसको, 1 prize इसको, roll number 3 को 140. तो कितने prizes और utilize हो जाएंगे? 40 prizes और utilize हो जाएंगे, right? So subtract 40 from here. So 62 में से भी 40 use हो गए. So I'll have 22 left prize. 22 prizes which will be left. So अभी 22 prizes जो हैं वो बाकी बचे हुए हैं. अभी इन 22 prizes का क्या करेंगे हम? See that. अब अगर ये 22 प्राइजेस 1 1 करके डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो ये 22 बच्चों में जाएंगे. तो वो 22 बच्चे मेरे इस कैटेगरी में कैलकुलेट होंगे क्या? एटमोस्ट 2 में कैलकुलेट होंगे? नो, दे विल नॉट बी कैलकुलेटेड. बट मुझे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ बच्चों को इस कैटेगरी में कैलकुलेट करना है. तो मुझे इन 22 प्राइजेस का क्या करना पड़ेगा? आई हैव टू मेक श्योर कि ये 22 प्राइजेस कम से कम बच्चों में बटे. अगर ये 22 प्राइजेस को कम से कम बच्चों में बांटना है, दैट मीन्स मेरे को एक बच्चे को ज्यादा से ज्यादा प्राइजेस देने हैं. ओके, ज्यादा से ज्यादा प्राइजेस कितने दे सकते हो? मैक्सिमम नंबर ऑफ प्राइजेस दैट यू कैन गिव टू ए स्टूडेंट इज 5, बिकॉज 5 ही सब्जेक्ट है. एक सब्जेक्ट में मोर देन 80 मीन्स 1 प्राइज, 5 सब्जेक्ट्स में मोर देन 80 मीन्स 5 प्राइजेस. सो मैक्सिमम 5 प्राइजेस आप एक बच्चे को दे सकते हो, जिसमें से 2 आपने ऑलरेडी दे दिए. तो ये जो 22 प्राइजेस बचे मेरे पास, इनको मैं 3-3 करके अगर डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो 7 बच्चों में चला जाएगा और एक प्राइज अभी बच जाएगा. ओके, सो लेट्स गिव, राइट, ये 22 में से मैंने क्या किया, 22 जो प्राइजेस मेरे बचे थे उसमें एक बच्चे को 3 प्राइज दे दिए, राइट, सो दैट कम से कम बच्चे मेरे 5 वाली कैटेगरी में आए और ज्यादा से ज्यादा बच्चे मेरे 2 वाली कैटेगरी में आए, राइट. तो मैंने इनको कितने 3-3 करके डालूंगा तो कितने बच्चों में बढ़ जाएगा? 7 स्टूडेंट्स में चला जाएगा. अभी एक प्राइज बच जाएगा. 7 इंटू 3 21 होता है. एक प्राइज जो होगा वो 8th स्टूडेंट को चला जाएगा, रोल नंबर 8 को चला जाएगा, राइट. रोल नंबर 8 को एक प्राइज और चला जाएगा, राइट. सो टोटल आउट ऑफ 40 स्टूडेंट्स 7 ऐसे बचे हुए जिनको 5 प्राइजेस मिले, राइट. 7 ऐसे स्टूडेंट्स हुए जिनको 5 प्राइजेस मिले, प्लस एक ऐसा बचा हुआ जिसको 3 प्राइज मिला, और बाकी जो बच्चे बचे 7 + 1 8, बाकी जो 32 बच्चे बचे उनको 2-2 प्राइजेस मिले. सो 7 इंटू 5 35 प्लस 3 इंटू 1 3, 32 इंटू 2 64. ये 102 आना चाहिए. आ रहा है क्या? 4 + 3 7 + 5 12 6 3 9, यस 102 आ रहा है. सो मेरे 102 के 102 प्राइज यूटिलाइज हुए. एंड इट्स मेकिंग श्योर कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को 2 प्राइजेस, एट मोस्ट 2 प्राइजेस मिले. तो कितने बच्चे आए? 7 बच्चे 5, ये तो मेरी कैटेगरी में नहीं है, एटमोस्ट 2, राइट. और एक बच्चा ऐसा है जिसको 3 प्राइज मिले, ये भी एटमोस्ट 2 में नहीं आएगा. लेकिन ये 32 के 32 बच्चे जिनको 2 प्राइजेस मिल रहे हैं वो एटमोस्ट 2 की कैटेगरी में आएंगे. सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग more than 80% in at most 2 subjects in class 8 will be 32, and the answer to this question is 32, right. So this is the answer to the question, right. So these are the various types, right. And you see that if you understand the concept, right, cram नहीं करना है, understand करना है. concept को ढंग से समझोगे तो फिर question कैसे भी change होके आएगा तो आप कहीं ना कहीं उसी concept से उसको utilize करके, उसी concept को utilize करके question को answer दे सकते हैं, right. And this I would say is one of the best method to solve these type of questions. Venn diagram बनाना 5 set का वैसे भी possible नहीं है. So this is the much better method to solve the questions like this. Okay, there are 2 more questions that I'll be discussing. I guess those 2 questions will now be very easy for you.
after discussing all these 3 questions, you will find those questions to be very, very easy. So both of those 2 questions will be discussed in the next video lesson, and then we'll close this topic, right? जिसमें हमारा maximum minimum in 5 set का Venn diagram का जो है concept है जो complete हो जाएगा. Thank you so much for watching this video. And this is my referral code LRDI SMEER, which you can use for Unacademy Plus subscription, bacho, right? If you are planning for Unacademy Plus and you wish to attend my live sessions on quantitative ability and logical reasoning and data interpretation, this is my referral code LRDI SMEER. Using this, you will get 10% off on Unacademy Plus purchase, and you will be able to attend all of my live sessions on Unacademy. Thank you for watching the video. See you in the next part of the video. Thank you.